Hi everyone, good evening and welcome to the analysis session of CUET 2023 UG examination. Today was the 13th day of the examination, and to the surprise of everyone, the exam probably now gets over on 11th of June. So, in case you haven't received your city intimation slip, forget admit card for time being. If you have not received your city intimation slip as of now, the chances are very high that you have your exam scheduled between 9th to 11th of June. Right now, what NTA has does is they have released the city intimation slip and the admit cards for those who have exams till 8th of June, but now we have even the reserve dates of 7th and 8th June being used now. And they have already intimated through the notification that the students who have been scheduled examinations between 9th and 11th June, they will be receiving the city intimation slip shortly, which means uh, another 2 days, probably, or maybe by Monday or Tuesday, you might get the city intimation slip for the examination. Now, that was a real surprise. In fact, actually, they should have mentioned it earlier that probably we are extending the examination. And for the same reason, a lot of students may not have got their admit cards, but they are keeping students on the hooks actually. So, a bit of clarity was definitely required. Today we have feedback for English, GT, a couple of other subjects which include political science from both the shifts, psychology and legal. So what I'll do is I'll start with uh, English first, and we look what happened, what has been the feedback of students who appeared for the English paper today. So, not very different, but yes, the difficulty level is where the students had different opinions. A lot of them felt that probably today's paper was moderately difficult. But if you look at the structure of the paper, that was exactly similar to what we have witnessed in last 12 days. 15 questions, three passages, 15 questions based on reading comprehension. The focus of the examination, the focus of the English language paper has been on testing the fundamentals of grammar as far as students are concerned. Synonym, antonym, definitely there were a couple of questions from each. Intent, for example, the synonym for intent was asked today. Match the following antonym, navigate का antonym बताना था. Fill in the blanks. There were 8 to 9 questions altogether. Parajumbles had 5 questions. One word substitution was another 5 questions. Idioms, phrases, there were a couple of questions. Sentence correction also had a couple of questions. Then the focus was definitely on grammar, as I said. So indirect speech, active passive voice conversion, indirect speech, direct speech conversion, verbs, adjectives, adverbs के ऊपर questions पूछे गए in a sentence. Word meaning, for example, the word like benevolent, that was asked actually in the English paper today. A couple of foreign words related questions were there, and letter based questions which included informal letter related, basically letter to editor. So that kind of questions, and exclamatory, the punctuation aspect, which we have seen probably a new kind of questions which we have seen this year in CUET. Moving on to the general test. General test, yes, again, moderate difficulty level. That is what students felt. Questions related to folk dance, classic dances, basically. What does the saffron color in the Indian flag represents? Who chooses, who elects the vice president of the country? So, kind of static GK I'm talking about. Then, current affairs about the recently launched rockets. Name of Pragati Maidan, which has been changed actually. Books and authors, there are a couple of questions out there. If you talk about British era related, end of Queen, important personalities, father of Indian atomic program के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था. साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी नोन एज एक्चुअली. सो ज्योग्राफी में माउंटेन पीक्स, बॉर्डर्स, इन सब के बारे में पूछा गया. इंपॉर्टेंट डेज में प्रगति दिवस के बारे में पूछा गया. There were a couple of questions on invention, discoveries and polity as well. Moving on to numerical ability section. Numerical ability, अगर हम बात करें, so we had questions around 25 of it.
नंबर सिस्टम मिक्स्ड विथ प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो, इन्वेस्टमेंट और सिंपल रेशियो क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मदर एंड डॉटर वर डूइंग वर्क इन अ सर्टेन रेशियो, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन रेशियो के तौर पे पूछा गया था। Then time, speed, and distance. Time was given, distance was given, speed was asked actually. There are a couple of questions there. Mixtures and allegations had almost 3 questions. Then equations, consistency of equations. अगर algebra की बात करें, simplification of equations. There are 4 of them actually. Then area and volumes. Radius of cylinder is doubled. चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया था। वॉल ब्रेथ एंड हाइट वाज गिवन, वॉल्यूम पूछा गया था, कैसे वॉल्यूम निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। देयर वर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एज वेल। एपीजीपी के 2 क्वेश्चंस पूछे गए एक्चुअली। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाइस, सो प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस भी थे। ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन था। If you talk about the logical reasoning, analytical reasoning, definitely most of the questions were there. सीरीज के ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस थे। अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, कोडिंग के ऊपर कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्शंस के 3-4 क्वेश्चंस थे आज। क्लॉक्स में एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। डे एंड डेट पूछा गया था 2010 2011 को लेकर के। ब्लड रिलेशंस के कपल ऑफ क्वेश्चंस में थे। पजल्स के 4 क्वेश्चंस थे। देन वेन डायग्राम और विजुअल रीजनिंग, वेन डायग्राम के ऊपर 1 क्वेश्चन और विजुअल रीजनिंग के ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। Moving on to the domain subjects, if we talk about psychology की अगर हम बात करें, so the case study was based on the unit meeting life challenges. Stress के ऊपर case study पूछा गया था। Psychological disorders के ऊपर almost 6 questions थे। Symptoms of schizophrenia, autism spectrum, इन सबसे related therapeutic approaches को लेकर के अगर हम बात करें तो there were 5 to 6 questions. Behavioral therapy, human existence, therapeutic relations के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। देन सेल्फ एंड पर्सनालिटी के ऊपर देयर वर 3 क्वेश्चंस आउट देयर। वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, द फर्स्ट यूनिट ऑफ साइकोलॉजी बुक की अगर हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग करके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, साइकोलॉजी एंड लाइफ, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, इन सब के ऊपर भी देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द यूनिट्स एक्चुअली। लीगल स्टडीज की बात कर लेते हैं। लीगल स्टडीज में जो केस स्टडी था वो ट्रेजेडी के ऊपर था। रीअरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। इजी पेपर था। जुडिशरी को लेकर के ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस वे देयर। आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। देन टॉपिक्स ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी लॉ एटसेट्रा, मैच द फॉलोइंग के टर्म्स पे देयर वर 4 क्वेश्चंस आउट देयर। देन आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल्स की बात करें, आर्बिट्रेशन के ऊपर विच पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग, मेडिएशन, काउंसलिंग, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस था। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें सो देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। लीगल प्रोफेशन प्री 1947 के ऊपर ऑलमोस्ट देयर वर क्वेश्चंस आउट देयर। लीगल सर्विसेज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में और लीगल मैक्सिम के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। अब 2 ही शिफ्ट होते हैं, 8:30 to 11:30 एंड 3:30 to 6:30। तो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, पेपर वाज डेफिनेटली इजियर what students felt. Uniform distribution across the topics, Cold War era, Stalin से related questions पूछे गए थे। couple of them were there. End of bipolarity के ऊपर 3 questions थे। प्रॉब्लम फेस्ड बाय अमेरिका, यूएस हेजमनी की अगर हम बात करें सो देयर वर 3 क्वेश्चंस आउट देयर। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर 5 to 6, फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन, साइंस के बारे में पूछा गया था। देन अगर कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएन इज अ हेवन और हेल, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट किसने बोला था। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर देयर 4 क्वेश्चंस। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर केस स्टडी पूछा गया था। फैक्चुअल स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस थे बिल्कुल। अगर हम सेकेंड बुक की बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो नेशन बिल्डिंग के ऊपर कपल ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। देन 3 क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, सीपीआई सीट्स विनिंग इन सम इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिस्ट हु गेव द 5-year प्लान, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की बात करते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के राजीव गांधी लोगोवाल एग्रीमेंट डेट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। मैच दी फॉलोइंग था, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में, किसान मूवमेंट के बारे में, नर्मदा बचाओ प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था, किसका किसका मूवमेंट था, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। रीजनल एस्पिरेशंस की बात करें तो which state was carved out of Assam, when did states were formed, डिफरेंट स्टेट्स फॉर्मेशन जो रिसेंट हुए थे वो उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था। देन रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में 1999 बीजेपी लेफ्ट और बीजेपी का जो गवर्नमेंट था उसके बारे में पूछा गया। सेकेंड शिफ्ट की अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो वो भी इजी रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चंस थे। एनवायरमेंट एंड नेचुरल स्टडीज के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर केस स्टडी पूछा गया था। कोल्ड वॉर एरा के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के 3 क्वेश्चंस थे। फिर यूएस हेजमनी के ऊपर असर्शन वाले क्वेश्चंस थे अबाउट वर्ल्ड ऑर्डर 1991 से लेकर के। एशियन फ्लैग रिलेटेड केस स्टडी आया था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर वाले चैप्टर से। सो 2 केस स्टडीज थे। China economic reform, when and who was the leader, when was the NATO formed, contemporary South Asia से अगर हम बात करें, how many judges are there in the United Court of Justice, international organizations, assertions based questions from security in contemporary world. अगर सेकेंड बुक की बात करें पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट तो बॉम्बे प्लान, प्लानिंग कमीशन, इन 1994 विच कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इंपॉर्टेंट वर्क जो होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज को मैच करना था, चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम की अगर हम बात करें। सेकेंड शिफ्ट में भी नर्मदा बचाओ आंदोलन और पार्टीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्चुअली। So more or less uniform distribution, and as far as domain subjects of humanities were concerned today, students felt that the domain subjects were relatively easier as compared to the English or the general test paper. उनको थोड़ा सा वहाँ difficult लगा. So that is what the feedback we had for today, as far as the English GT and the humanities stream subjects were concerned. So the exam will be now happening from Monday onwards. Third and fourth are off days, no exams happening for CUET next 2 days. So good time for those who have their exams in the coming days. Definitely keep on revising. Now the exams have been extended, and for those students who haven't received their City intimation slip, please be assured your exams are likely to be on either 9th, 10th, or 11th of June. And hopefully by 11th of June, the exam gets over. It's been already a very long process going on, actually. So see you on Monday evening, 8 p.m., same time, same platform, actually. And all the best to the candidates who are appearing for the examination on Monday.